Gopimanande. Have to change the time out. 10 minutes. 40 minutes. Where's that? Why do we need that? Why do we need that? Huh? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 8. 9. Oh, chapter 9. 8th canto, chapter 9, text number 3. तो 8वें स्कंद का 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक। Katam Kanja Palakshakshi. Katam Kanja Palakshakshi. Kutova Kim Chikir Shasi. Kasyasi Varavamaru. Matnativa Manangshirnaha. Katvam Kanja Palakshasi. Kutova Kimchikir Shasi. Pashasi Varavamuru. Matnati Vamanangshinaha. Katvam Kanja Palakshasi. Kutova Kimchikir Shasi. Kasyasi Varavamuru. Matnati Vamanangshinaha. Natvam Ganja Palakshasi. Kutova Kimchikir Shasi. Kasyasi Varavamuru. Matnati Vamanangshinaha. Next. Govind. Kasyasi Varavamuru. Matnati Vamanangshinaha.
Natvam Ganja Palakshasi Kuto Vab Tinkari Sasi Kashasi Varavamoru Pangativa Manaksinaha Katvam Ganja Palakshasi Kuto Vakim Tikirsasi Sri Varavamuru Matativa Manangsinaha Kata Tvanga Palakshasi Kuto Vakim Tikirsasi Kashasi Varavamuru Matativa Manangsinaha Madakaganyasasi Kudova Tikirsasi Kasyasi Varavamoru Patadiva Manangsinaha Kautam Ganja Palakshasi Kuto Vakim Chikirsasi Kasyasi Varavamoru Diva Manangsinaha Ganja Palakshasi Kuto Vakim Chikirsasi Kasyasi Varavamoru Mativa Manangsinaha. We'll do the translation of word for word meanings later. Verse, we'll go back to verse number 1. This is the beginning of the 9th chapter, verse number 1. And now today we just now chanted verse number 3. तो अभी हमने तीसरा जो है वर्ष अभी जपा था, अभी करा था, अब हम वह पहला और दूसरा भी पढ़ेंगे. So this is a very juicy chapter. ये बहुत ही अमृतमय अध्याय है. I mean, the whole Bhagvatam is nectar, you know. पूरी भागवतम की अमृत है. But because this is directly about Leela avatars, लेकिन ये किंतु जो this chapter, लीला अवतार के विषय में, especially about the Mohini Murti pastime, विशेषकर मोहिनी मूर्ति अवतार के बारे में, is particularly ecstatic तो ये बहुत ही आनंदमय है and a little funny. और बहुत ही हास्यप्रद भी है. We'll see later when we get to the third verse. We'll see why I'm saying it's a little funny. तीसरे चौथे श्लोक में आगे पढ़ेंगे. Picture, as we discuss about Mohini Murti, picture that there's 80,000 Naistika brahmacharis आप ऐसा चिंतन कीजिए कि 80,000 ब्रह्मचारी बैठे थे. sitting in the forest, and all they're doing, they're all pukka austere, you know. वहाँ पे सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी बैठे थे और एक जंगल में बैठ के सुन रहे थे. But you'll see how they relish hearing about the English word is luscious. You know, luscious means plentiful. Plentiful. Great, great. तो वो लोग जो है बहुत आनंद ले रहे थे ये श्रवण करके जो बताया. Beauty and sensuality of Mohini Murti. तो मोहिनी मूर्ति का रूप और सौंदर्य देखकर. Hey, it's not my fault. I didn't write the Bhagavatam. मेरी गलती नहीं है, मैंने भागवतम नहीं. The sages at Dharmashreni, they want to hear और जो वहाँ पे all the details नैमिषारण्य में वो about beautiful women. They want to hear all these details. They're not agitated. It's all Bhagavad Gita. They want to hear. तो ये जो जितना भी रूप सौंदर्य वर्णन किया गया है भगवान का, तो ये वो So it just so happens that Mohini Murti is the most beautiful of all females. और ये उनके मन को बिल्कुल भी Because, you know, Lord Vishnu is Yogeshwar. तो भगवान विष्णु जो है वो योगेश्वर है. If he wants to take a female form, he's going to take the most beautiful female form. अगर वो स्त्री का रूप ही नहीं है तो सबसे सुंदर स्त्री का रूप है. And very, very sexy. बहुत ही सुंदर.
The sages in Shranya, all these Paka brahmacharis, they want they want to hear it. तो जितने भी नैमिषारण्य में स्थित ऋषिगण Why? This is Lord Vishnu. Never mind if he's wearing the costume of a sexy woman, but you want to hear it because it's transcendental as Bhagavad Gita. तो वो लोग सुनना चाहते थे कि भगवान विष्णु किस प्रकार यह रूप या मोहिनी मूर्ति का, क्योंकि ये भगवत कथा है. So, this chapter describes how the demons, being enchanted by the beauty of Mohini Murti form, agreed to hand over the container of nectar to Mohini Devi, who tactfully delivered it to the demigods. इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सारे असुर मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर उसे Actually, देने के लिए राजी हो गए. I don't think we're going to get to it in the first 3 verses, but she wasn't so tactful about it. हमें मुझे आइडिया नहीं, पता नहीं है कि ये पहले I mean, she's this gorgeous female, you know, ये सुंदरी जो मौजूद थी वहाँ पे, too beautiful, the most beautiful female in the whole universe. दो सबसे सुंदर स्त्रियां हैं पूरे ब्रह्मांड में. And she's holding this pot of nectar. तो वो जो है इस अमृत के घड़े को It's the nectar of immortality. तो वो जो है अमृत प्रदान करने It came out of the churning of the ocean of milk. वो जो है समुद्र मंथन से Now, she got possession of it. तो उन्होंने उस पात्र को अपने पास लिया And she's holding it and says, all right, now I'm going to distribute the nectar, और फिर वो सबको बोलती है कि ठीक है, अब मैं ये सबको अमृत का वितरण करूँगी. but I may not be fair about it, she says. और वो पहले बता रही थी कि मैं इसको The, समान तरीके से the नहीं demons, you know the word enamored? They're so dizzy-headed with lust, you know. करूँगी. लेकिन जो असुर थे वो इतने पागल हो गए थे कामों की इच्छा से. That's all right. वो कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. She's telling him flat out, I'm going to cheat you, she's saying. But they say, that's all right. They can't think of, they can't think about anything except how to have sex with this incredibly beautiful woman. So she's saying, that's all right. I mean, they're saying, the demons are saying, that's all right. But she's planning to outright cheat him, and they say, that's all right. So, tactfully is, not exactly tactfully, very firmly, very cleverly, she delivered it to the demigods. Not exactly tactfully. But when the demons got possession of the container of nectar after the churning, an extraordinarily beautiful young woman appeared before them. जब असुरों को अमृत पात्र मिल गया तो उनके समक्ष एक अद्वितीय सुंदरी प्रकट हुई. All the demons became captivated by the young woman's beauty and became attached to her. सारे असुर इस तरुणी के सौंदर्य से मोहित हो गए और उस पर आसक्त हो गए. Now this is interesting. ये रोचक है The demons became attached to Mohini Murti. कि जो असुर गण वो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो The रहे. demons don't like Lord Vishnu. वैसे असुरों को भगवान विष्णु से कोई आसक्त. Try to understand this incredible trick. तो ये जो है भगवान की माया है The demons are opposed to Lord Vishnu. कि जो विष्णु असुर जो है वो विष्णु के हमेशा They consider Lord Vishnu to be the enemy वो हमेशा अपने शत्रु मानते हैं भगवान विष्णु. because he's the protector of the devotee. They know he's protector of the devas. So someone who's protecting their enemy is also their enemy. That's the way they विष्णु see. जो है हमेशा देवताओं को संरक्षण देते हैं, इसीलिए जो उनके दुश्मन को संरक्षण दे रहे हैं. Even if they know that Lord Vishnu is God, but still, because they're covered over by the modes of nature, they can't appreciate, you know. वे जानते थे कि जो भगवान विष्णु भले ही भगवान भी हो, लेकिन वह जो है माया तीन गुणों के द्वारा आच्छादित होते हैं. Just like in the narration of Bali Maharaj, जैसे कि बलि महाराज के कथन में आता है, Durvasa Muni was his guru. Or दुर्वासा मुनि I doubt he's still his guru because Durvasa Muni is not a pure devotee, whereas Bali Maharaj, huh? Durvasa, isn't it Durvasa? शुक्राचार्य. Oh, sorry, Shukracharya. शुक्राचार्य उनके गुरु थे He's no pure devotee. और वो एक शुद्ध भक्त नहीं थे. He's barely, I don't know, he'd be very generous if you call him a Sakama devotee. तो उनको ठीक है हम कह सकते हैं एक सकाम भक्त, He's not an actual devotee. लेकिन वह एक भक्त नहीं है. He's a yogi, hardcore yogi,
वह एक योगी है, एकदम कट्टर योगी, and he's into it. और बस उसी में है लगे, But he's also very intelligent. लेकिन वो बहुत बुद्धिमान भी है। Mayaya Prityagan. माया है पृथक ज्ञान है, His intelligence is stolen by illusion. कि जो बुद्धि है वो चुरा ली गई है माया। He knows what's what, but that doesn't mean he's ready to surrender to Lord Vishnu. वो जानते थे कि सच क्या है, लेकिन फिर भी वो शरणागत होने को तैयार नहीं थे भगवान। Because when Lord Vishnu appears as a disguised as a 5-year-old Brahmin boy, जब भगवान विष्णु आते हैं छल करते हुए एक ब्राह्मण के पुत्र के holding the umbrella, एक जो है छाता पकड़ के अपने हाथ में, he knows who that boy is. तो वो जानते थे कि वो बच्चा कौन है, He's not confused. वह जो है संशय में नहीं थे। See that Brahmin boy, he asks Bali Maharaj, give me only 3 steps of land. तो उस ब्राह्मण बालक ने पूछा बलि महाराज से, मुझे 3 पद भूमि दे दीजिए। Bali Maharaj says, no, come on, I'm the emperor. You got to ask for more than that. बलि महाराज ने कहा, मैं तो राजा हूँ, आप मुझसे और भी अधिक मांगिए। No, Maharaj, just 3 steps of land is all I want. तो वो कह रहे, नहीं महाराज, ये 3 पद भूमि में ये बहुत है। In the meantime, his guru is freaking out. और उसी दौरान जो है उनके जो गुरु थे वो काफी क्रोधित हो रहे थे, Sukacharya. शुक्राचार्य, He's freaking out. बहुत क्रोधित हो रहे थे। He knows who that little Brahmin boy is. वो जानते थे कि ये छोटा बालक कौन है। He says to Bali Maharaj, no. Don't do it. तो वो बलि महाराज कहते, नहीं, तुम ऐसा मत करो। He says 3 steps of land. But that little boy, that's Lord Vishnu, the Almighty Lord Vishnu. Don't be confused. That's the Almighty Lord Vishnu in disguise. तो वो कहने लगे, नहीं, ये जो बालक है ये भगवान विष्णु और ये 3 पद भूमि चाह रहे हैं, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करो। Don't do it. Don't give him 3 steps of land. मत करो, तुम ऐसे 3 पद भूमि मत दो। Bali Maharaj says, why not? बलि महाराज कहते, क्यों नहीं? I'm the emperor who's asking for 3 steps of land. राजा हूँ, Come on. ऐसे 3 पद भूमि I have to be मांगो, generous. मेरे को देना You know. चाहिए। No, the Shukracharya says, no. He is Lord Vishnu. He's not just some ordinary Brahmin boy. He's Lord Vishnu, the Almighty. See, कहते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु है। he knows who he is, तो शुक्राचार्य जानते थे वो कौन था, but has no interest whatsoever in surrendering, none, 0. लेकिन फिर भी वो शरणागत होने की बिल्कुल भी Even though he knows, yes, this is Lord Vishnu, but the opposite of surrendering, he's saying, no, don't surrender to this boy. तो वो जानते थे कि ये जो बालक है भगवान विष्णु है, लेकिन वो He's going to cheat you. तो वो जो है उनसे अच्छा कर रहे, उनको मना कर रहे थे कि नहीं आप With the first step of land, he's going to take half the universe. He knew. तो वो Very बताया intelligent. कि महाराज को कि ये हमारे साथ छल करेगा। Mayaya Prityagan, intelligence spoiled, stolen by illusion. Mayaya Prityagan. He knew. तो उनकी बुद्धि बहुत थी, वो जानते थे, लेकिन वो जो है माया का ज्ञान थी, वो जानते थे कि वो पहले कदम You could say that he was Trikalagya. He knew past, present, future. So he knew exactly what Vamana was going to do. He knew exactly. वो त्रिकाल लड़के थे, वो जानते थे कि By intelligence, he knew. वो पहले कौन वामन थे, But he had no power, no desire to surrender. लेकिन उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी भगवान की शरण। No, don't do it. With the first step of land, he's going to take half the universe. तो नहीं आप ऐसा मत करिए, वो पहले अपने कदम में आधा ब्रह्मांड को नाप लेंगे। He knew. वो जानते थे। And the second step of land, he's going to take the other half of the universe. और दूसरे कदम में वह बचावा आधा जो है Well, you promised 3 steps of land, then what are you going to do? और फिर तीसरा जो पद है उसके लिए आप क्या करेंगे? You won't be able to fulfill your promise to a Brahmin, then you're in deep trouble. आप अपना यदि आप अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे ब्राह्मण के प्रति तो आप बड़ी Bali Maharaj is thinking, well, I'm not going to, I'll worry about that later. बलि महाराज कहते हैं कि ठीक है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। So it was true, with the first step, Vamanadev took half the universe, ये सत्य हुआ कि पहले ही कदम में वामन देव ने आधा ब्रह्मांड नाप लिया and with the second step, he took the other half of the universe. और दूसरे कदम में उन्होंने बचावा आधा, All right, where's the third step? फिर तीसरा कदम कहाँ रखे? Said, you put your foot on my forehead, please. बलि महाराज ने कहा मेरे सर पे जो है तीसरा कदम रखो। So he was trying to fulfill his promise, otherwise he was in big trouble. You break a promise to Brahman, you're in deep doo-doo. वो जो है अपना जो प्रण उन्होंने लिया था वह पूरा कर रहे थे जो ब्राह्मण So he had to promise something for the third step. He had to promise something
साथ जो है ऐसा प्रण लिया But you know what? This is a deep and complicated pastime तो ये बहुत ही जटिल लीला है जो उस समय हुई थी because he was trying to surrender fully Atmaniveda. He's the acharya, famous acharya for Atmaniveda, तो बद्री महाराज जो है वो प्रयास कर रहे थे आत्मनिवेदन का पूरी तरह शरणागत giving up everything for the Lord. सब कुछ छोड़ना भगवान की प्रसन्नता Certainly he was prepared to give everything up for the pleasure and satisfaction of Lord Vishnu. No hesitation, not even any. वो बिल्कुल चिंता किए बिना सब कुछ देने को तैयार थे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए But how is he going to make good on the third step? लेकिन अब वो जो तीसरे कदम का क्या है So he said, you put your lotus foot on my forehead for the first step. इसीलिए वो कहते हैं अब अपना तीसरा कदम जो है वो मेरे But the interesting part is that Lord Vishnu Vamanadev, on the one hand, he accepted that surrender, Atmaniveda. He surrendered, he accepted that surrender on the one hand, तो एक हाथ में देखा जाए तो भगवान विष्णु ने इस चीज को स्वीकार किया जब उन्होंने ये शरणागत हुए but on the other hand, he didn't, on another level, he did not accept. और दूसरे स्तर पे देखा जाए तो उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया He ordered he be tied up in ropes उन्होंने यह सबको आदेश दिया कि इनको बांध दिया जाए रस्सियों से because he considered, on another level, he considered that Bali Maharaj had not fulfilled his promise. तो दूसरे स्तर पे उन्होंने ऐसे देखा कि बलि महाराज ने अपना So he's tied up with ropes. तो इसीलिए उनको रस्सियों से बांध His wife got really upset. उनकी जो भार्या थी वो No, काफी गुस्सा हो गई come on, you know, you have to untie him. This is not fair. She was protesting. आपको जो है इनको दोबारा रस्सियों से खोल देना चाहिए ये But Bali Maharaj, he never protested. He just surrendered completely Atmaniveda. You see how deep Atmaniveda is? Try to understand. बलि महाराज ने कुछ भी विरोध नहीं किया वह पूरी तरीके से शरणागत थे Even though he was being royally cheated, he didn't mind. Why? भले ही उनको सबके सामने जो है उनके साथ छल किया गया फिर भी उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया क्यों Because he was being cheated by Lord Vishnu. क्योंकि उनके साथ छल किया जा रहा था लेकिन वो विष्णु If a devotee is cheated by Lord Vishnu, he just simply smiles, offers Dandavat rubs, and some prayers. It doesn't get upset. यदि किसी भक्त के साथ छल किया जाए भगवान विष्णु द्वारा तो वह सिर्फ दंडवत प्रणाम करता है उनसे प्रार्थना करता है लेकिन वो विरोध नहीं करता Try to understand that Chibanga Krishna, Govinda, Gopal, तो आप समझने का प्रयास करिए भगवान विभंग कृष्ण गोपाल he's cheating all of us. वो हम हमारा सबके साथ छल कर रहे हैं Well, I mean, he's a cheat, you know. वो जो है एक छली है He's the best of cheaters. वो छलियों में सबसे श्रेष्ठ है Don't mess with Krishna. कभी इनके साथ पंगा मत Prabhupada said, don't try to cheat Krishna. प्रभुपाद ने कहा आप कृष्ण के साथ कभी छल करने का प्रयास मत कीजिए He's a better cheater than you are. वो आपसे अच्छे छल करने वाले हैं What is material world? Everybody's trying to cheat God. इस They're भौतिक trying to do संसार it. में सभी जने भगवान के साथ छल They will करने का not प्रयास करते succeed. हैं, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे They will be cut down, the demons. There's so many demons today. We see big demons running the planet. इतने सारे They appear to बड़े be running the प्रयासों में, planet. लेकिन इन सब का पतन होगा They're not actually running the planet. It's वो just वो लोग इस मिट्टी a में- show, an empty show. ये जो एक खाली शो है Who's actually running the planet? कौन इस पूरे पृथ्वी को चला रहा है Lord Vishnu, of course. भगवान विष्णु And he has so many thousands of deputies. और उनके बहुत सारे यहाँ पे Ultimately, Lord Vishnu runs the show. तो भगवान विष्णु ही है जो इस पूरे So these fools, Mayaya Prityagan, तो ये जो असुरगण है इनका माया घटक their ज्ञान, knowledge, first of all, they don't even have knowledge to be stolen. तो उनके They're too पास- dumb to have knowledge to be stolen, but they think, I am Baka, I am undefeatable. So many Hiranyakasipus today. तो इनके पास तो ज्ञान भी नहीं है तो इनका क्या माया घटक ज्ञान होगा इनके पास How intelligent are they? They're fighting like street dogs. तो क्या बुद्धि है उनमें वो एकदम सड़क You don't hear it here, but in Punjabi Bagh, outside the gate, there's too many dogs. यहाँ पे तो पता नहीं पंजाबी बाग में गेट के आगे ही So बहुत it's all about territory. तो वो लोग सिर्फ अपना राज्य स्थापित करने के बारे में सोचते रहते हैं They make boundaries. तो वो लोग जो है कुछ रेखा If any outside dog wanders into their boundary, अगर कोई बाहरी कुत्ता उनके रेखा में प्रवेश get out! वो जो है तो कह रहे हैं, नहीं बाहर जाइए My place, mine. ये मेरा Ours. है, मेरी जगह
No, they don't mind. They've got their colleagues there, you know. तो So उनके it's our place. Get out, get out. You don't belong. You're a stranger. Go, go, leave. नहीं, आप जो है बाहर के व्यक्ति, आप जाइए, घर से जाइए. Many times that dog will run away with a tail between the legs, which is a sign of humiliation for a dog, you know. बहुत बार ऐसा होता है, जो कुकुर है वो अपने पूंछ को दोनों पांव के बीच में दबा के भाग जाता है, जो कि उनमें विनम्रता. If that dog doesn't surrender, they'll attack him and kill him. If he really doesn't surrender, they'll attack him and kill him. यदि वो कुकुर Street dogs. नहीं होगा उनके, तो फिर वह उनको काट के खत्म ही कर देते, वहीं पे मार Excuse me, do you see any difference between a street dog and modern politicians? देते. तो क्या आप देखते हैं कि जो सड़क के कुत्ते हैं और जो आज के राजनीतिक हैं, उनमें They have 2 legs, street dogs have 4 legs. उनमें कोई फर्क ही नहीं. Get out, get out. उनके पास 2 पाँव हैं, इनके पास 4 पाँव हैं. I and mine. Aham Bogi, सिर्फ मैं और मेरा, Aham Ishvara. हम ईश्वर. You know, the Supreme Lord said it most perfectly. तो भगवान ने सबसे अच्छे तरह से Aham Bogi, कहा है कि हम भोगी, Aham Ishvara. हम ईश्वर. Here we have it in a capsule. तो ये जो है भगवान ने दिया है. It couldn't be said any more perfectly. इससे अच्छी तरीके से और नहीं कहा जा सकता है. 5,000 years ago. Krishna said it 5,000 years ago. तो भगवान कृष्ण ने ये 5000 वर्ष पूर्व Is it कहा. dated? Is it stale? Is it dated? तो क्या वो पुराना हो गया है? What do you think? No matter. No? It's ever fresh. It is just as applicable today as it was when Hiranyakshak was persecuting the whole universe. It's just as valid today. Only these are, we say in America, pipsqueak. आज भी जो है ये पूरी तरीके से वैद्य है, आज भी लागू होता है. Chota, very. These are germ-sized demons, and Hiranyakshak was a giant demon. That's the only difference. The mentality is identical. फर्क सिर्फ इतना है कि हिरण्याक्ष इतना बड़ा असुर था और आजकल के जो है एकदम कीड़े के समान जो है असुर है, लेकिन Just like in Indonesia, the government is trying to stop the devotees. They want to shut down the ISKCON temples in Indonesia. सरकार है वो शुरू में यही प्रयास कर रही थी कि भक्तों को रोकने का. वो बंद करना चाहती It's a Muslim country. थी. ये मुस्लिम देशों में. But it's not the Muslims that are trying to shut down ISKCON in Indonesia. It's not the Muslims. इंडोनेशिया में भी ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है वह बंद करना चाहते In हैं. Indonesia, the Muslims are fairly mellow. तो इंडोनेशिया में जो मुस्लिम लोग हैं वह ठीक हैं. It's the envious Hindus, so-called Hindus. They're the ones that are trying to shut down लेकिन ISKCON. वहाँ जो तथाकथित हिंदू गण हैं वह चाहते हैं इसको. They're complaining to the government. तो इसीलिए वह है जो These are not bona fide Hindus. They're not real Hindus. तो वही है जो सरकार को ऐसा भड़का रहे हैं कि ये जो है असली हिंदू नहीं. They're just fake. They're fake. They're pretending to be Hindus. They're not real Hindus. ये सिर्फ They're not bona fide. हिंदू है, छल कर रहे हैं. Out, out. Out, out, out. बाहर निकलिए, वो ऐसा कहते हैं. So, you know, the GBC is working overtime on this. It's a nasty crisis. तो इसीलिए जीबीसी भी इस पे बहुत जो है कार्य कर रही है. But in the Bhagavad Gita, Sanjay, I think it says, wherever there is Krishna and Arjuna, तो there must be भगवद गीता में victory. संजय कहते हैं कि जहाँ भी कृष्ण और अर्जुन हैं, So Krishna will be victorious. तो कृष्ण जो हमेशा विजयी रहेंगे. All these demons will be cut down by, the English word is indefatigable. Indefatigable, you know that word? It's a big word. तो ये जो है You know indefatigable? वो जो Unstoppable, right? हरा दिए जाएंगे. Unstoppable time. तो जो ये जितने भी असुर गण हैं इन सब Like the waves of the ocean are unstoppable. ये एकदम जैसे समुद्र की जो Go ahead, fool. Try to stop the waves of the ocean. समुद्र Build की a जो dam. लहरें हैं, जिस प्रकार उनको रोका नहीं जा सकता उसी प्रकार You भगवान can't do की it. समय की शक्ति को नहीं. Sometimes they build dams and cement barriers on a pier that goes out into the ocean. कभी-कभार वो ऐसा बांध बनाते हैं एक जिसका जो मुख है वो Severe winter, high waves, big waves. In California, where I come from, there on the ocean, you know, sometimes they're
huge waves, you know. मैं कैलिफोर्निया से आता हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ समुद्र है, वहाँ बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। They go crashing right over the top of these large cement barriers, right over the top, smash, और वो boom. जो है इतनी तेज प्रवाह से आती है कि वो इनको तोड़ देती है, जितने सीमेंट के। They're not stopping the ocean. They're only slightly containing it. Only when the ocean is in an angry mood, you know, devastation. वो ऐसा नहीं है कि वो समुद्र को रोक रहे हैं, समुद्र का थोड़ा भी क्रोध है तो वो पूरा तबाह। In the United States right now, and some of the islands, tropical islands southeast of the United States, कुछ जो द्वीप है जो साउथ ईस्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स, there's there are some 4 hurricanes are going on now, 4 at the same time. तो वहाँ पे जो है 4 ऐसे तूफान जो है वहाँ पे This is Kali Yuga, you know. ये कलियुग है। The sinful reactions are catching up. तो ये जो लोगों के पाप में So, ये सब they've issued warnings of floods because these hurricanes, they cause tsunamis, you know. तो इसीलिए उन्होंने बाढ़ की सूचना ये सब जगह बता दी है, क्योंकि ये जो तूफान है इसके कारण सुनामी आती है। City of New Orleans in the United States, it's a very major city. ये बहुत ही बड़ा शहर है। It was founded by the French over 100 years ago. तो ये फ्रेंच के द्वारा जो है वहाँ पे मौजूद है, लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने ढूंढा था। The city was built below sea level. तो वो जो शहर है वह समुद्र के तट से नीचे स्थित Is है। that very intelligent? तो क्या ये बहुत बुद्धिमत्ता है? So they have some dams to restrain the ocean because the city's below sea level. That's really Maya Pritigan, really stupid. तो उन्होंने जो है बहुत बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बना रखी हैं, क्योंकि वो शहर जो है समुद्र स्तर से थोड़ा नीचे है। So the dams are more than 100 years old. तो वो जो बांध है वो 100 वर्ष के पुराना A few years back they broke and everything flooded in all directions. 100 वर्ष पहले जब वो आए और फिर उन्होंने Big, सब कुछ तोड़ दिया। huge floods. और बहुत ऊंची जो है बाढ़ आई। Even the devotee area was flooded. जो जहाँ भक्त स्थित थे वो भी स्थान जो है But by the arrangement of Lord Jagannath, वहाँ भी बाढ़ आई। लेकिन the जगन्नाथ devotee temple is on top of a small hill. भक्तों का जो मंदिर था वह एक Lord Jagannath had it all planned out वह एक थोड़ा ऊंचे स्थान from the पे beginning. स्थित था। I mean, if human beings could be treated like God, certainly the Supreme Lord can be. तो एक साधारण मनुष्य तरीका रखे नहीं हो सकता, लेकिन So भगवान अवश्य हो the सकता। temple was on top of a small hill. तो इसीलिए जगन्नाथ जी की कृपा से वो जो मंदिर था वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित Oh, it's deep flooded water, probably 2 meters deep in all directions, minimum. तो लगभग 2 मीटर गहरा पानी हर जगह फैल गया था। And some devotee had a large truck, कुछ भक्तों की बड़ी बड़ी ट्रक भी थी, long truck, I don't know how many meters, 10, 15 meters long truck. लगभग Big 10-15 truck. मीटर लंबा ट्रक था। So they were slowly driving through the water. The truck was high enough, could drive through the water. वो जो ट्रक था वो थोड़ा इतना ऊंचा था कि वो इसीलिए पानी के अंदर से वो जा रहे थे। Should I continue? या मुझे आगे बताना चाहिए? See, these are juicy things. That's why I digress, because these are juicy things you don't know. ये बहुत ही अमृतमय कथा है, आप लोगों को नहीं पता इसके। So the truck was driving very slow through the water because the water was up to the hood of the truck, so they had to go slow, जो ट्रक है वो धीरे-धीरे चल रहा था क्योंकि पानी काफी ऊपर तक भरा हुआ था। In the meantime, the army came along, the U.S. Army, because in these disasters like floods and hurricanes and all that, and the army comes out to help in the disaster management. फिर जो है क्योंकि यहाँ पे इतना जो ये बाढ़ आई थी, इसीलिए जो आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पे So the army came, वहाँ आर्मी आई थी। and they said, we're going to take your truck, we're going to take your truck. तो वो कहने लगे We need your truck. कि हमें आपकी Big truck, they didn't have one like that. We need your truck, we're going to take your truck. And they had the legal power to do it in an emergency. तो वो कहने लगे हमें आपकी ट्रक की आवश्यकता है और उनके पास भी शक्ति भी थी। But being empowered by Lord Jagannath, the devotees talked him out of it. Just see. लेकिन जगन्नाथ जी के द्वारा जो है उनको ऐसा Don't mess with the Supreme Personality of वो Godhead. लोग उससे
So they talked about it. So then, wading through the water, the truck made it all the way to the island. It was now an island where the temple was situated. तो फिर जो है उसमें से निकलते हुए भक्त लोग जो है उस एक द्वीप जैसा जो मंदिर बच गया था वहाँ पर The truck was big enough, so they loaded all the computers, all the deities, Jagannath, Baladev, Subhadra, all the deities, all the paraphernalia, all the computers, everything. They loaded everything, and I don't know how many devotees, probably at least 20 devotees. तो वो ट्रक इतना बड़ा था कि उसके ऊपर सारे कंप्यूटर और जितने डीटीज थे सब और साथ में 20 भक्त भी उस पे स्थित थे And they, so everything fit in the truck. They abandoned the temple building because the flood was very strong. तो उन्होंने जो मंदिर बना था उसको छोड़ के सभी भक्त उस पे आ गए And with Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and all the devotees and all the paraphernalia, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जितने भी भक्त थे और उनके जितने भी they drove hundreds and hundreds of kilometers all the way to Texas, which is a long ways away. वो सब जो है उस ट्रक के ऊपर बैठ के वो टेक्सास तक गए जो काफी दूर So the temple and all the devotees camped out in the ISKCON Texas temple for a while because they weren't flooded. तो वो सभी जने जो है वहाँ पे आ गए ISKCON टेक्सास में वहीं पे ही It was a pastime, you know. उनका जो मंदिर था जहाँ पे Lord Jagannath generates wonderful pastimes. ये बहुत ही सुंदर लीला है जगन्नाथ जी Proves that he's God because the Nectar Dosha says Krishna generates wonderful pastimes. That was a pastime. तो ये जो है अवश्य ही रूप में एक लीला थी नेक्टर और डिवोशन में बता रखा है जिस प्रकार जो है भगवान लीलाएं करते हैं Anyways, the demons, they were fighting among themselves because they wanted to get possession of the jug of nectar. तो अब जो है असुरगण अमृत So, I mean, just like today we say, आपस में लड़ रहे थे if there's money, it's not even gold, you know, not even jewels, paper money. आजकल तो जो धन भी है वो भी कागज का जो है During the, सोना भी है what was it called, not deregulation, but when Mr. Modi devalued the money, तो जो मोदी जी थे उन्होंने जब इस because of it was mostly being used for the black market. That's why he did that. जो डीमोनेटाइजेशन उन्होंने किया था वो इसलिए किया था क्योंकि सारा काला धन इस्तेमाल किए जा रहे थे लोग Black money, सारा जो है काला धन big trunks of 1,000 rupee notes, you know, पूरी जो है पेटियां भरी हुई थी 1000 रुपए के नोटों से all black money. सब काला धन That's why he did that devaluation. That's why. इसीलिए A lot of people don't even know why he did it. बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया So there were just these trunks and trunks. People had big dustbins full of bills, you know, full of money, paper money that was now worthless. तो उसके बाद जो है इतने उनकी पर पेटियां भरी हुई थी नोटों की जो सब की सब डस्टबिन में गए They were just throwing it out. They were throwing it out. डिमोनेटाइज They couldn't use it for anything because it was black money. अब वो इसका कुछ भी उपयोग नहीं कर If you सकते came in with a lot of this black money into the bank, I want to deposit it. No, sir, you can't do it, you see? Because the banks knew it was black money. तो आप वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि सारा काला धन लाके बैंक में जमा करा दें Maya Prijigam. So everybody's knowledge is stolen by illusion. तो बैंक वाले जानते हैं कि ये काला धन है इसलिए माया प्रकट है No value. ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं So the demons fighting amongst themselves. This is going on since time immemorial. तो जो असुरगण थे वो अमृत पाने के लिए आपस में लड़ रहे They were trying to get possession of the nectar. अतः उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने So the demons selected this beautiful woman as a mediator अतः उन्होंने अपने झगड़े को निपटाने के लिए इस सुंदरी to settle in their quarrel. सुंदरी को मध्यस्थ चुना That was not Mahamaya. तो ये जो है महामाया के अंतर्गत That was Yogamaya. ये योग माया के अंतर्गत है You see, it requires years and years of study to understand the interactions and influence of Yogamaya versus Mahamaya. ये बहुत ही गहरा तथ्य है और इसको समझने के लिए बहुत ही वर्ष की जो है लगता है Mahamaya is योग माया का प्रकोप Mahamaya is the material energy. महामाया का अर्थ है भौतिक प्रकृति
But this pastime was certainly created by Yoga Maya, not by Maya Maya. ये जो लीला है ये निश्चित रूप से योग माया के अंतर्गत ही, महामाया के अंतर्गत नहीं। Demons don't very much like mediation. तो When they're quarreling, they don't like mediation. असुर गणों को मध्यस्थ अच्छे नहीं लगते। Right now and today, between these petty politicians in different countries, so much quarreling is going on. जैसे कि आजकल भी जो है अन्य इतने सारे देशों में जो है आपस में लड़ाई चल रही है। Sometimes they call on the U.S. to mediate, कभी कभार वो यूएस को बुलाते हैं मध्यस्थ के रूप में, or sometimes they call on somebody else to mediate. या फिर वो किसी और को बुलाते हैं। Mostly they're not interested in mediation उनको पसंद नहीं है कि किसी को मध्यस्थ चुना जाए, because they're afraid they'll get cheated. क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमें हमारे साथ। But this is different. This is Mohini Murti. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग है, यहाँ पे जो है मोहिनी मूर्ति स्वयं है। Sorry, folks, but God is more intelligent than you are. तो जो है भगवान आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। He's got the intelligence to design this whole creation. उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो पूरे इस संसार को ब्रह्मांड बनाते हैं। Can you do that, Dr. Frug? क्या आप कर Engineer, Mr. Engineer? डॉक्टर मिस्टर महाराज Were you an engineer before? क्या आप इंजीनियर थे पहले? That's it. Can you design a universe that'll last for millions of years? No. नहीं, God could do that. He can design a universe that lasts for millions of years, and then by His will, He maintains it, and then by His will, He destroys it. केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसा ब्रह्मांड पूरा बनाया इतने सालों तक, Indefatigable or unstoppable time destroys everything. Kalarupa, और फिर उसको बनाते हैं, उसको स्थिर रखते हैं और फिर form of उसको time. दोबारा उसका संहार कर देते हैं काल के रूप। Our Madhurya Gopal is the form of time. हमारा जो मदन गोपाल है वह काल के रूप। He's creating, वो and then बनाते He's हैं, maintaining, वो उसको बचा के रखते हैं, and then ultimately He will destroy everything. और फिर अंत में वो सबको संहार कर देते हैं। Kalarupa. ये है काल रूप। People don't know Kalarupa is very beautiful. लोग नहीं जानते कि जो काल रूप है वो इतना सुंदर है। I'm having some fun because I've been publishing on Facebook मैं थोड़ा इसमें आनंद ले रहा हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पे इन्हें डाल रहा हूँ some photos of Madhurya Gopal's tattoos कुछ जो है चित्र And his गोपाल lo- जी की, and the beautiful face of Radharani. और जो सुंदर मुख है श्रीमती राधारानी का। This is God's girlfriend. I'm teasing him. This is God's girlfriend. ये जो है भगवान की सखी है। Isn't she beautiful? I put as a caption on the photos. क्या वो सुंदर नहीं है? ये This is मैंने- going out to like 3 million people, ये लगभग 3 मिलियन लोगों तक the पहुंचा। general audience of Facebook, millions. ये बाहर के लोग हैं, So when it's good preaching, तो ये बहुत अच्छा प्रचार है। they go, hey, what? What is this all about? वो सोचते हैं अरे ये क्या है? ये सब क्या बताया जा रहा है? God, that's what God looks like? क्या भगवान ऐसे दिखते हैं? Yes. हाँ, See, in the West, because this is going out to lots of hundreds of thousands of Westerners also, you know? तो ये जो चित्र है ये पाश्चात्य देश में भी जा रहा है। तो पाश्चात्य देश In the West, the only conception of God, if they believe in a personality of God at all, an old, buff old man, you know? पाश्चात्य देशों में वो भगवान के यदि कुछ सोच पाते हैं तो वो ये Very, very muscular, looks like he's been working out in the gym every day for the past 20 years, वो you लोग know? ऐसा चित्रण करते हैं कि भगवान अगर होंगे तो वो Very इतने- strong. And he's reaching out his finger and putting life into Adam. It's supposed to be Adam's, a young man, a naked young man, supposed to be the first वो लोग ऐसा first be human being in the universe. वो That's लोग all ऐसा speculations. वो लोग ऐसा सोचते हैं Concoction. कि बहुत ही बूढ़े होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे और वो अपने एक आ सकते हैं और जो है एडम में शक्ति डालते हैं, जीवन देते हैं। So he has long white hair and long white beard, तो उनकी बहुत बड़े बड़े बाल हैं, बहुत बड़े दाढ़ी है, but a very buff, youthful body. लेकिन एक बहुत ही स्वस्थ He's not naked like Adam, but he's just has a charter on and अवस्था में नहीं है जैसे कि a longi, and he's very, very macho, उन्होंने जो लुंगी और चादर पहन रखा very है, muscular, very masculine. बहुत ही शक्तिशाली भी है। Well, that's the Christian conception. If they have any conception, they get it from
the paintings by Michelangelo on the ceiling in Rome. तो ये जो है क्रिश्चियन लोगों का ऐसा मानसिकता है, वो ऐसा सोचते हैं भगवान के विषय में। और अगर Very famous paintings और ये on माइकल एंजेलो द्वारा जो है कुछ the, that's what he made God look like. उनसे ही वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान शायद And Adam was a young, handsome young man, completely naked. जो एडम था वो एक एकदम नौजवान था और पूरा नग्न अवस्था। So if there's a Christian conception of God, he's a buff old man. यदि क्रिश्चियन लोगों में मत माना जाए तो जो भगवान है वो एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं। That's it, you know. We say, no. वो लोग ऐसा बोलते हैं यही होगा, लेकिन हम कहते हैं God is Navayovana. तो भगवान जो है वो नव यौवन है। We like this. हमें यही पसंद है। He's eternally youthful. वह नित्य रूप से They don't know God is eternally youthful, no clue. वो नहीं जानते कि भगवान नित्य रूप से यौवन है। Therefore, our business is to educate them. इसीलिए हमारा कार्य है उनको Yes, बताना। God is young and beautiful. भगवान जो है बहुत सुंदर है He has many girlfriends. और यौवन भी है और उनकी बहुत सारी सखियां। You can literally become a lover of God if you want to, आप भी बन सकते हैं भगवान के प्रेमी यदि आप or you can become a friend of God. आप भगवान के सखा बन सकते हैं। They don't know these things. वे ऐसा नहीं जानते How you could become a friend of God, that doesn't calibrate. कैसे जो है हम भगवान के सखा बन सकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। If we have puppy brain, their brain's less than puppy. यदि हमारा छोटा दिमाग है तो उनका तो बिल्कुल ही छोटा दिमाग। So the demons, they became attached by a beautiful young woman. तो जब असुरों ने वो आसक्त हो Well, what a trick, what a fabulous trick. तो ये जो है कितना सुंदर जो है भगवान ने He is Lord Vishnu. वो भगवान विष्णु है Disguised as a beautiful young woman. जो कि अपने आप को ढककर आए थे एक सुंदर स्त्री के So becomes they became attached to her, but she is Lord Vishnu. So by trick of Yoga Maya, they're becoming attached to Lord Vishnu. Just say, try to understand. That's love. That's compassion. How the Lord of the universes is compassionate on even on the demons. भगवान कैसे कृपालु हैं कि उन्होंने अपनी योग माया से अपने आप को जो असुरों के प्रति भी आसक्ति उत्पन्न कर दिया अपने पर। And the devotees also compassionate even on the demons. तो भक्त भी जो है वो बहुत ही कृपालु होते हैं असुरों के। I don't know how many of you have read this part of Srimad Bhagvatam. तो मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने जनों ने ये भागवत Mohan Gurcharan, you must have read. मोहन को जो पढ़ा हुआ है। When after the death of Hiranyakashipu, so हिरण्यकशिपु के वध के बाद naturally Prahlad Maharaj becomes the emperor. तो प्रहलाद महाराज जो है वह राजा बनते हैं। And he was just a kid, you know, he was only 5 years old, you वो know. जो है सिर्फ एक 5 साल But the system was very perfect, so how could a kid become the all-powerful emperor? उस समय जो है शासन था वो बहुत ही अच्छे से चलाया करते Do थे। you know the answer, professor? Do you know the answer? कैसे 5 साल में बाहर- Anybody know the answer? किसी को उत्तर पता है कैसे 5 साल How में can a बाहर- 5-year-old boy become the all-powerful emperor? कैसे जो है 5 साल And manage the whole kingdom? पूरा शासन चला रहे हैं राजा बन चुके हैं। The answer is that the emperor was always surrounded by, the English word is caters, large amounts of first-class Brahmins. That's how. तो वो जो इसका उत्तर ये है कि जो राजा होता है उसके हमेशा जो घिरा होता है बहुत सारे Just like Chanakya Pandit is famous as the advisor to King Chandragupta, isn't it? तो जो चाणक्य पंडित है वो भी Famous. बहुत प्रमुख है और बहुत Well, he was just one very empowered, very clever, very intelligent Brahmin. तो वो जो है बहुत एक ऐसे इतने चतुर ब्राह्मण थे। He lived in his grass hut somewhere outside of the outside of the kingdom, outside of the castle. तो वो जो है अपनी झोपड़ी में रहते थे बाहर एकदम राज्य के बाहर। The Maharaj invited, come on. You come live in nice. We'll give you a nice. You'll give you your own house inside the kingdom. Come on, why don't stay outside? मैं आपको पूरा एक घर बना के दूंगा इस राज्य के अंदर। He said, no. Nothing doing. I'm not interested. तो उन्होंने कहा नहीं मैं। So you can imagine a generous offer to live opulently inside of the palace boundaries. He was not interested. तो वो उनकी ऐसी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, भले ही उनको राज्य के अंदर इतना Because a Brahmin is supposed to be naturally renounced. और ब्राह्मण जो है वह स्वभाव से ही त्याग उसमें होना चाहिए। So he was advisor. So the 5-year-old boy, surrounded by
It could be as many as 100 or more top of the line Brahmins who know everything about Shastra, all the Shastra, जो 5 वर्ष के प्रहलाद थे उनके चारों ओर जो है हमेशा all ब्राह्मण रहते थे। all the Dharma, 100 की संख्या से भी अधिक ब्राह्मण रहते थे। what to सब do, जानते थे, what to do, वे जानते थे क्या करना when है, to do it, कब करना है, what not to do. कब क्या नहीं करना है। Because they were learned in the Shastra, they knew all these things. क्योंकि उन्होंने अध्ययन कर रखा था शास्त्र का, इसलिए In वो one जानते case of Maharaj Chandragupta, he had only one advisor, but Chanakya Pandit was so good, he always gave him the top of the line advice, good advice, when he should move militarily, when he should not. That all that advice was given by Chanakya Pandit. तो चंद्रगुप्त मौर्य तो केवल एक ही ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन वह इतने चतुर थे, इतने अच्छे जो So even today, political commentaries, modern political commentaries, in some cases are based on Chanakya Shlok. Huh? चाणक्य की थी। तो आज भी जो है, आज के भी राजनेता जो है वह They're very famous in India. Rest of the world, maybe yes, maybe no, but in India, everybody knows about Chanakya Pandit. सभी भारत में भी सभी जगह जानते हैं चाणक्य पंडित को। बाहर Why? Why was he so good? क्यों क्यों इतने अच्छे थे? He was empowered by Lord Vishnu. That's why. क्योंकि उनको Empowerment. उनको शक्ति प्राप्त हुई थी भगवान विष्णु से। Good intelligence means empowerment by the Supreme Person of Godhead. अच्छी बुद्धि प्राप्त करना मतलब भगवान की कृपा। So, the demons were just fighting amongst themselves, Maya Pratigan, तो जो असुर थे वो अपने आप में लड़ने लगे and they selected this beautiful woman to be the mediator in their quarrel, और उन्होंने झगड़े को निपटाने के लिए सुंदरी को मध्यस्थ चुना and they became attached to her. और फिर वो उससे आसक्त हो What a fabulous trick! What a fabulous trick! गए। कितना सुंदर छल किया है, कितना सुंदर। Because he's taking this guise of an incredibly later in this chapter, you'll hear descriptions. I mean, Shuddha Goswami, he gives all the descriptions, beautiful front side, everything. We'll see when we get to the third verse here. शुद्ध गोस्वामी जो है बहुत ही विस्तार रूप से ये बताते हैं कि These great sages, celibate, what do you call, Naistika brahmacharis, they want to hear about all the descriptions of the body parts. तो ये जितने Many places throughout the Bhagavatam. जितने से जो ऋषिगण थे वह सुनना चाहते Well, they do not become agitated in spite of the graphic detail of the sexuality of beautiful women. नहीं होते थे इतना They're Atmarama. रूप के बारे में सुनने They don't become agitated. वह बिल्कुल होते थे। So they selected her as a mediator to settle their quarrel. तो इसीलिए फिर उन्होंने उनको मध्यस्थ चुना अपने So, झगड़े को निपटाने के taking advantage of their weakness in this regard, लिए। उनकी इस दुर्बलता का लाभ उठाते हुए Mohini, the incarnation of the Supreme Person of Godhead, भगवान की अवतार मोहिनी ने got the demons to promise that whatever decision she might give, they would not refuse to accept it. और शुरू से यह वचन ले लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उसे मानने से वे So नकारेंगे। they are completely intoxicated by her beauty and sexuality. I mean, try to understand, super sexy. तो वो जो है पूर्ण काम को इच्छा से So sexy that even Lord Shiva went down, वो इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षित थी, chasing her like a fool, chasing her like a fool, भगवान शिव भी उनके पीछे भागने लगे। simply thinking, how can I have sex with her? Lord Shiva, the Almighty Bhagavan, yes. भगवान शिव ऐसा सोचने लगे कैसे मैं उनके साथ मैथुन कर सकता हूँ। So even Lord Shiva became bewildered by her beauty and sexuality. तो जो भगवान शिव थे वो भी उनके सौंदर्य से आकर्षित थे। So clever because Krishna, of course, is the most clever. तो क्योंकि वो इतने भगवान विष्णु जो है वो हमेशा सबसे चतुर थे। So she got the demons to promise that whatever decisions she might make, they would not refuse to accept it. See? तो इसीलिए उन्होंने ये वचन ले लिया कि वह जो भी फैसला करेगी उसे मानने से वे नकारेंगे नहीं। Don't try to cheat God. भगवान के साथ छल करने का प्रयास मत He is a better cheater than you are. वो आपसे अच्छे छल कर सकते हैं। Just see how all these Pubertime demons today are heads of state, tyrants, dictators, तो यहाँ जितने भी स्थिति डिक्टेटर हैं, they all go down. जितने भी नेता हैं, वो सब उनको पता They'll all be defeated by Kala Rupa. ये
सब smashed, को हरा दिया जाएगा, pulverized, powderized, finished. चूर्णित कर दिया जाएगा, एकदम खत्म कर दिया जाएगा। Because the Shastra says, what is the future of this body? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यही इस शरीर का For the undevotees, food for jackals. कि अगर अभक्त हैं तो ये जो शरीर है यह खाना बनता है लोमड़ियों Or food for worms. या कीड़ों का खाना बनता है। Of course, nowadays, most everybody's cremated. और आजकल तो जो है सभी जनों को गाड़ दिया जाता है। But an undevotee put in the ground, what's going to happen? लेकिन अगर अभक्त को जमीन पे अंदर गाड़ दिया जाए तो क्या होगा? Food for worms. वो जो Isn't है it? कीड़ों की Bhagavad says, and it's a fact. भागवतम में बता रखा है यही। But now, I mean, even if they put them, they used to put them in a coffin, you know, a large box, पहले जो है उनको एक सैया usually made of wood, but that would just rot in the ground, and so the worms are going to come anyways, termites are going to come, तो वो सब सड़ जाता था तो फिर जो worms, कीड़े उनमें प्रवेश करते bugs, and they'll eat the body anyway. So we see the infallible words of Srimad Bhagavatam. तो फिर जो है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते कीड़े और उनको खा लेते थे। तो हम देखते हैं कि भागवतम में So she made them promise, whatever I decide, तो मोहिनी ने ये वचन दे दिया कि जब वह जो फैसला करेगी you have to accept it. उसे मानने से नकारेंगे नहीं। When the demons made this promise, the beautiful woman Mohini Murti had the demigods and demons sit in different lines. जब असुरों ने यह वचन दे दिया तो सुंदर स्त्री रूपा मोहिनी मूर्ति ने असुरों तथा देवताओं को So अलग-अलग that पंक्तियों she में could, बैठा दिया, she could distribute the nectar. जिससे वह अमृत वितरण कर सके। So she knew that the demons were quite unfit to drink the nectar. वह जानती थी कि असुर अमृत पान करने के योग्य नहीं है। So that's when she said, it doesn't say in this summary, but later in the verse it will say, I might not be fair in how I distribute this nectar. She tells them flat out. She discloses, but that's all right. I mean, they can't even think anymore. मोहिनी मूर्ति They can't even think, you know, because they're just, all they can think about is how to have sex with her. That's all they can think about. That's human. मूर्ति ने जो है स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं जो है समान तरीके से But even the mighty Bhagavan, Lord Shiva, that's all he could think about is how he could have sex with Mohini Murti. And he knew who she was. भगवान शिव भले ही ये जानते थे कि कौन है मोहिनी मूर्ति, But by being covered by Yoga Maya, he forgot. लेकिन योग माया All he could see is a gorgeous, extremely sexy woman. तो वो योग माया के आचरण से वो ये देख पाए नहीं देख पा रहे थे When Lord Shiva was chasing after her, तो वो जो है एकदम it wouldn't be surprising if she was wearing a no choli. That wouldn't be surprising. तो वो जो है चोली नहीं पहने थे तो ये बहुत ही And a see-through sari, probably. एकदम जो है साड़ी से दिख रहा था सभी। So they're going, he's going, I want, and he couldn't catch her, could not catch her. वो शिव के पीछे भागते रहे, मुझे चाहिए, लेकिन And because the Ishapanishad says, the Lord can overcome all others running. That's exactly what was happening in that pastime. उपनिषद में कह रखा है कि भगवान सबसे तेज भागते हैं। The demons and Lord, even the mighty Bhagavan, Lord Shiva, had no chance of catching her, no chance. तो जो असुरगण हैं, भगवान शिव है, कोई मौका ही नहीं है वो पकड़ सके भगवान। But she knew the demons were quite unfit to drink the nectar. लेकिन वह जानती थी कि ये जो असुरगण हैं यह योग्य नहीं है अमृत पान के लिए। Therefore, by cheating them, अतः उन्हें धोखा देकर she distributed all the nectar to the demigods. उसने सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। When the demons saw this cheating of Mohini Murti, जब असुरों ने मोहिनी मूर्ति का यह छल देखा, they remained silent. तो वे मौन बने रहे। But one demon named Rahu लेकिन एक असुर जिसका dressed himself like a demigod देवता का वेश धारण कर लिया and sat down in line of demigods. और वह जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। You could say he made the mistake of sitting next to the sun and moon. That was a blunder. तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। He's a permanent enemy of the sun and the moon. तो वो जो है बहुत ही बड़े शत्रु हैं चंद्रमा और सूर्य के। So, when the Supreme Personality of Godhead understood how Rahu was cheating, जब भगवान ने जान लिया कि
को किस प्रकार धोखा दे रहा है। Well, this is also interesting because under Yoga Maya, he or he, she, the Mohini Murti, left it to her devotees to point out that hey, he's a demon. Come on, you can't do this. Stop him. Don't give him the nectar. He's a demon disguised as Deva. मोहिनी मूर्ति ने ये जो है अपने भक्तों जो देवता करते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया कि वह इसको पहचाने कि ये जो है। Of course, Lord Vishnu knows everything. भगवान विष्णु हालांकि सब कुछ जानते हैं। But it's a pastime. लेकिन ये एक लीला है। So he left it to his devotees to tell him, oh, stop. No. He's a demon. Don't give him any nectar. He's a demon. भक्तों ने ये सूचना दी उनको, नहीं ये असुर है, इसको आप अमृत मत दीजिए। So she got the point. तो वो समझ गई। So she's Lord Vishnu. वो भगवान विष्णु ही हैं। So she took out her chakra. उन्होंने अपना चक्र निकाला, Tuk. और वो चक्र सीधा जाके से एक मानव का गला काट Cut off his head. उनका गला काट दिया। But what happened was, by the time she cut off his head, और जब तक उन्होंने he'd already drunk some of the nectar, so it went down to his throat जो level. अमृत थे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत अमृत का पान कर लिया था, वो अमृत उनके गले तक पहुंचा The rest of his body died. और उनका जो बाकी जो शरीर है वो Body can't survive without a head. और जो शरीर है वह सर के बिना नहीं। But his head had already been dosed by the nectar of immortality. लेकिन उनका जो सर है वह अमृत उसमें पहुंच So his head remained alive. तो उनका सर जो है वह जिंदा रहा। To this day, the planet Rahu in outer space is the floating head of Rahu. आज तक भी जो राहु है वह बाहर तैरता The है rest of the body is not there. और वो सिर्फ उनका चेहरा है, बाकी But astrologer knows that Rahu can wreak a lot of havoc. लेकिन Because Rahu is a enemy of the Devas and Rahu is not helpful to devotees either. लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो जानते हैं कि जो राहु है बहुत खराब है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब So Lord Vishnu, immediately cut off the demon's head. से। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने तुरंत ही उनका सर काट दिया। But what he'd already tasted, the nectar, therefore, although his head was severed, he remained alive. The head remained alive. पहले ही अमृत किया था, अतः सिर काटे जाने पर के बावजूद भी वह जीवित था। After the demigods finished drinking the nectar, जब देवता गण अमृत पी चुके थे, Supreme Personality of Godhead assumed his own form. तो भगवान ने Form. अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। Shukadeva Swami ends this chapter by describing how powerful is the chanting of the holy names, सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय का समापन इस वर्णन के साथ करते हैं pastimes, and paraphernalia कि of भगवान the Supreme के Personality of नामों, Godhead. उनकी लीलाओं तथा साज समान के जप में इतनी शक्ति है। So that was just verse number 1. तो ये जो है केवल इस अध्याय का Shukadeva Swami said, thereafter the demons became inimical, तो ये पहला श्लोक है। inimical means सुखदेव गोस्वामी ने कहा, hostile तत्पश्चात् असुर towards one another. Throwing and snatching the container of nectar, they gave up their friendly relationship. तत्पश्चात् असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए, उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने Meanwhile, they saw a very beautiful young woman coming forward towards them. इस बीच उन्होंने देखा कि अत्यंत एक सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ रही थी। Upon seeing the beautiful woman, the demons said, alas, how beautiful is her beauty! उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक How है। wonderful is the luster of her body! इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है How wonderful the beauty of her youthful और age! उसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। Speaking this way, they quickly approached her, full of lusty desires to enjoy her, इस तरह करते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना and began to inquire from her in many ways. और उससे तरह-तरह के प्रश्न पूछने लगे। So now we do the translation of text 3, हम तीसरे श्लोक का and we'll end on that. और इसी से खत्म करेंगे। Who are you? They're asking. हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम Kanja Palaksha, Akshi, having eyes like the petals of a lotus. कंज पलाश अक्षी, कमल की पंखुड़ियों जैसी। Kujava, from where did you come? कहाँ से? Chim, chim,
Chikirshase. किम चिकित्ससि What is the purpose for which you have come किस here? प्रयोजन से यहाँ आए हो? Kasya, of whom Asi, आसी who do you belong to? को Because in Vedic culture, a woman that age should be already married, but she's, तो क्योंकि वैदिक संस्कृति they could में see that there was no man was protecting her. They could see that, so they figured, okay, it's fine. It's a free for all. Let's catch her because there was no man protecting her. तो वैदिक संस्कृति में जो स्त्रियां थी वो हमेशा संरक्षण में रहती थी अपने पतियों के, तो अगर इसका कोई भी पति नहीं था तो वो जानते थे कि ये सबके लिए सब जने Vama Uru, of you whose thighs are extraordinarily beautiful. वाम हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली These are the Nastika brahmacharis that ये सब जो Brahmacharya, ऐसे ब्रह्मचारी वहाँ बैठे they don't become agitated by this. वो ऐसे उत्तेजित नहीं You might become agitated, but they आप लोग don't. इससे उत्तेजित हो सकते हैं Beautiful thighs, but this is Bhagavad. सुंदर जांघों वाली, लेकिन ये भगवान के हैं। Matnati, agitating like Manangshi मत न within our minds. उत्तेजित करती हुई इस They're admitting. आरामसी मन को, You're so sexy, you're agitating our minds. They're admitting it. तो वो इतनी सुंदर थी, वो सबके मन को उत्तेजित कर रही थी। Oh, wonderful, beautiful girl. You have such nice eyes, हमारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि resembling the petals of a lotus flower. कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती हैं। Who are you? तुम आखिर कौन हो? They suspect she's not an ordinary person, you know. वो संशय करने लगे ये कोई They साधारण know all the devas, they know that she's not a deva. देवता जानते थे कि ये कोई देवता नहीं, देवगण नहीं है। Where do you come from? आप कहाँ से आए हैं? What is your purpose in coming here? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? And to whom do you और belong? तुम किसकी हो? O you whose thighs are extraordinarily हे beautiful. अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, Our minds are becoming agitated simply because of seeing you. हमारे मन तुम्हारे दर्शन से ही विचलित हो रहे हैं। So then there's a short purport by Srila Prabhupada. इसका एक छोटा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। He says, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the question to whom you belong means, whose daughter are you? असुरों ने इस अद्वितीय सुंदर से पूछा तुम किसकी हो? स्त्री। And the demons knew that she was still unmarried. तो जो असुर थे वो जानते थे कि वो अभी तक Every one of them desired to marry her. अतः उनसे हर कोई विवाह करना चाहता था। Therefore they asked, whose daughter are you? इस तरह उन्होंने पूछा तुम किसकी पुत्री हो? And they still believe in marriage in those days. तो वो उस समय भी जो ऐसा विवाह में विश्वास रखते थे। Okay, we'll stop there. तो हम यही Jagaguru Srila Prabhupada ki jai. Grantha Shima Bhagavatam ki jai. Gaur Pipanande.